Hello my dear students, welcome back to Balajee online classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you mathematics of class 7th. I will be teaching you chapter number 8 of your textbook, which is comparing quantities. Compare करना means किसी के बीच में तुलना करना, ठीक है? So we can compare the quantities in two ways, either by the difference, by calculating the difference between them, or by division. So whenever we compare any quantity, two quantities with the help of division, then we call it as ratio. Ratio is expressed as like this symbol. This symbol, जिसको आप इंग्लिश में कोलन कहते हैं, in maths we call it as ratio. Suppose I have written 10:45, but this is not the ratio in the simplest form. Let me tell you, ratio must always be written in simplest form. So if it is written 10:45, which means you have to first of all convert it into simplest form, and then only it will become a ratio, proper ratio in the simplest form. You can cancel it. 5 2s are 10, 5 9s are 45, which means 2:9 is the ratio. This symbol is known as is-to. We read it as 2:9. Okay, so this is called ratio. Whenever you have to form equivalent ratios, if there is a ratio like I have given you 2:3 is a ratio, and you have to write the equivalent ratio. So first of all write it like this in the form of a fraction. And do you remember that how to write equivalent fractions? I am multiplying it by 2. In the denominator also and in the numerator also, both. 2 2s are 4, 3 2s are 6. That means 4:6 is one of the equivalent ratios of 2:3. Similarly, you can calculate n number of equivalent ratios. आप 2 से multiply आपने किया, you can multipy it by 3, then 4 and so on. So you will keep on getting the equivalent ratios. Next is about the variation. When you are comparing two quantities, तो कौन सी quantity दूसरे के साथ किस तरह से change हो रही है, किस तरह से vary कर रही है, that is called variation. Suppose let's take an example of the cost of few things. Suppose I have bought 5 pens. Okay, so the cost of 5 pens is, for example, 50 rupees. Okay, now if I have to increase the number of pens, I have to buy, for example, 50 pens. So what will happen? The price will also increase. This is known as the direct variation. Direct variation means कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ती है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक. दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट वेरिएशन. बट दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस. एग्जांपल इज सपोज देयर आर 10 लेबर्स एंड दे आर वर्किंग ऑन अ फील्ड, और उनको पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने में फॉर एग्जाम्पल 5 days लगते हैं. तो अगर मैं लेबर्स बढ़ा दूं, 10 की जगह मैंने 20 लेबर्स कर दिए, तो क्या नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा लगेंगे? अभी वो लोग काम अपना 5 days में कंप्लीट किए ले रहे थे, तो क्या नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाने से भी डेज बढ़ जाएंगे? नो, डेज विल गेट रिड्यूस, क्योंकि ज्यादा लोग अब काम कर रहे हैं, तो उनको टास्क कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा. दिस काइंड ऑफ वेरिएशन इज नोन एज इनवर्स वेरिएशन, या फिर आप कह सकते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली रिलेटेड. सो डायरेक्ट वेरिएशन में आप एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, और इनवर्स वेरिएशन में अगर आप एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज कम होती है. सो these are the variation things. Next is about the percentage. Whenever we talk about percentage, आपको होता है कि इतना परसेंट ऑफ इतना, किसी परसेंटेज का 10% ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ 50, आपके पास कोई नंबर होगा, आप उसका परसेंटेज निकालते हैं. यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनी स्पेसिफिक वैल्यू. सो व्हेनेवर यू रिमूव दिस परसेंटेज साइन, देन अपॉन में आ जाता है 100. ऑफ इन मैथमेटिक्स मीन्स मल्टीप्लाई एंड 50. व्हाट विल हैपन? 0 and 0 cancel, this 0 and this 0 cancel, which means 5. So 10% of 50 is 5. Now if there is the increment and decrement, suppose the salary is like 8,000 and there is an increment of 10%. So 10% of 8,000 will be added to 8,000. मतलब 8,000 तो पहले थी, लेकिन इंक्रीमेंट हुआ है. इंक्रीमेंट मीन्स वी हैव टू ऐड, और जब कभी डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज होता है, सो फॉर दैट वी हैव टू सबट्रैक्ट. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 8,000
plus 10% means 10 upon 100, off means multiply, and 8,000. These two zeros will be cancelled. 8,000 plus 80 into 10 is 800. So what will be the answer? 8,800. That means the new salary will be 8,800 rupees. तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब कभी परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं और उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बारे में बात की जाती है. नेक्स्ट इज अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको परसेंटेज का भी काम लगता है कि उसमें भी ऐसा होता है कि प्राइस कुछ था, कभी कभी डिस्काउंट की वजह से वी हैव टू डिक्रीज द प्राइस, ठीक है, या फिर जैसे ये होता है कि ऑफ सीजन है उसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है प्राइस, या फिर कभी कभी अगर इंक्रीज किया जाता है कि प्राइस पहले ये था, इनिशियली ये रेट था और अब रेट बढ़ गया है, तो उसके लिए भी हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ता है. तो प्रॉफिट और लॉस की जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए. प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. ठीक, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. इस तरह से आप, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है तो उससे आप वाइस वर्सा अगर आपको ट्रांसपोज करके निकाल सकते हैं. सपोज आपको इसमें से कोई एक चीज नहीं पता है, टू ऑफ द थिंग्स आर नोन एंड वन थिंग इज अननोन, तो आप उसको अकॉर्डिंगली ट्रांसपोज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. जिस भी वैल्यू, अब आपको यहाँ पर जो भी अननोन होगा आप उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस. इस तरह से आप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे. The last topic of this chapter is about the simple interest. Whenever we borrow the particular amount of rupees from a bank or from somewhere, then उस पे कुछ परसेंट इंटरेस्ट लगा होता है. ठीक है, देयर इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है एनुअली या हाफ ईयरली, वो डिपेंड करता है. और फिर जितना पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने वो चीज ली है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो द प्रिंसिपल is P. P stands for the principal. Principal is the amount of rupees जो आपने borrow किए, ठीक, वो होता है principal. Then rate होता है, rate of interest, कि उस पर कितना rate of interest चार्ज किया गया है वो परसेंटेज में होगा. And the next one is about the टाइम, कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, कितने ईयर्स के लिए, फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए है उतना आपको टाइम होगा. ठीक, सो अगर आपको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, SI, what is the formula for calculating the simple interest? P into R into T divided by 100. Okay, the principal, rate and time, these three will be divided and then these three will be multiplied and then divided by 100. So with this formula we calculate the interest. Once the interest is calculated, अब आपको निकालना होता है, after calculating the interest you have to calculate the amount payable. So the formula for amount is, for calculating the amount we have to add the principal plus interest. जो आपका स्टार्टिंग में प्रिंसिपल होगा और जितना आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया है आप उन दोनों को ऐड कर देंगे. सो यू विल गेट द अमाउंट. और जितने भी ईयर्स के बाद कहा गया, सपोज अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, आप उसके अकॉर्डिंग अमाउंट निकाल लेंगे. यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग टाइम रख देना है, ईयर्स रख देना है. सो चिल्ड्रन, दिस वाज इट. योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. I hope you have understood everything. In case of any doubt or any query, you can ask me in the live class. I'll explain you there. The notes and the solutions will be provided on School Mitra app. Download it from there and complete your work. But first of all, try to do the questions on your own. And do remember Sadhya ma'am's rule that maths comes by practice.